Nandini, you can see? Yeah, not visible. Okay, okay. So both of you have to be very audible and discuss, ask a lot of questions because see, at times as a tutor, I will not even be able to understand whether you have understood or not, right? So it's very, very important that we interact a lot while we are going through this. I have kept 30 sessions for this because I want you to become an expert in Power BI. While we complete these 30 sessions, we should feel very, very confident working on every aspect of Power BI. This is my goal and my target, right? Okay. Okay, so this kind of 5 PDFs we'll have. The first one is all about the introduction. I'll just go through it and I will try to explain slides one by one so that you get an overview of what is Power BI and what are we going to learn into this. Okay, so as I move down, it says the agenda, and the agenda will cover these basically 6 topics. It will have introduction to Power BI, which we are going to do today, right? After that, we will get into the business where the first step in Power BI is called data transformation. Okay. 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 Data transformation means that nowadays data is available on different forms and in different ways and in different modes. Data is available. When I say this, you'll be able to understand that data is available in the form of Excel files, in text files, in CSV files, in PDF files. It is available in different forms of database servers like SQL, MySQL, right? It is available in from the web, from the internet. Data can be available in different ways and forms, right? Correct. So the first job is to convert that data into a common format so that we can analyze that data. So converting that data into a proper analyzable format is called data transformation. And the tool which we will be using to do this is Power Query, right? The tool which will be used for data transformation is Power Query. After this, once the data has been transformed, we will learn to create data models. Data modeling we will learn after that. Okay. 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 Once we have created data models, then we will be learn to create measures. In Excel, what we call as functions or formulas. In Power BI, they are called DAX. Data analysis expressions. And we will learn ways to create dynamic measures which will help us to do different analysis and different insights to be drawn from those data will be using these DAX measures. Okay. Okay. And finally, we'll be doing the visualization. Whatever we have done till now, we will convert it into interesting visuals so that we can present it to the team, to the boss, to the manager, to the client, whoever requires it. We will create suitable visuals for them. Okay. Okay. And then comes the optimization thing, which is always done. Once we have done it, we try to optimize our model so that it works efficiently, gives proper outputs. So last one is the optimization step. Okay, guys. Okay. So who among you would like to just say a few lines about each of it so that we get a feel that we have understood what are the different steps? So, Nandini, is that her name? Is that your name? Yeah, Nandini. I would Yeah, like to go first. I mean, whatever I've understood from Sanjay sir's brief, yeah, like data is exactly. available in various forms, be it Excel or even Word. It is Yeah, available in various forms, right? And even SQL or in the internet, we have data everywhere. So
And then now what that is going to be, that's how search started. And then he spoke about data transformation, which is converting data into analyzable format. Yes. Using Power Query, is that what you said? Yes. 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 So, Yes. so after that, we'll be creating data models uh, Yeah. using Yes. Power Query. And then Sir spoke about DAX, which is nothing but data analysis expressions, uh, like for formulas in Excel. Since I have really no exposure to Power BI, I just used it on the front end. Actually, I've used Okay. the visualization. The visualization is what I use, where Okay. the team works on it, and then I get to see the data in certain format. So that part is very clear for me. Though I Okay. am not right. Yeah, that is what I have understood from the brief. Nancy, would you like Okay. to go next? Yeah, so from what I have understood, sir talked about how there's data present everywhere, and will be. Am I audible? Yes. Yes. Yeah, yeah. Yeah. So he talked about Power Query in data transformation, how we'll make it into an analyzable format. Then we'll be creating data models. Then DAX is something that's similar to formulas in Excel, and visualization is something where visually we'll work on the visual aspect, and optimization is something I don't remember. Yeah, So even can me. you reiterate? Optimization is something which we always do whenever we are creating any project or thing. Optimization is like trying to improve the efficiency. So in our model, we may feel that something is redundant. We may remove that. Something requires some changes in the model. We can do that. So that is optimization. You try to optimize your resources, right? So optimization is that part of it, but it is very small part of whatever all is there, right? So now we will move ahead. Gradually, you will get a hang of I everything. also wanted to ask. I also Hello. wanted to ask these numbers that you, yeah, the numbers that you've Yeah, written actually, beside, no, no, no. are they the number of Yeah, sessions that you, yeah. These numbers are not of much significance. I just put some numbers, thinking that how many sessions and things will be there. I was just trying to create something like that. okay. Okay. So now we will go to introducing to the Power BI, which was the first topic I said, introduction to Power BI. Right. So topics we will cover here is introducing Power BI, installation options, how you get the Power BI into your system, interface and workflow, Power BI versus Excel, adjusting some settings and helpful resources is the first part, right? So as I move ahead, you'll see that Microsoft Power BI is a self-service business intelligence platform, which includes both desktop, and web-based applications for connecting, modeling, and visualization data. Right? So important thing is that you connect all the data, we create data model, and we visualize it. Again and again, similar things will keep coming. So it says why should we use Power BI? So why to use Power BI? The answer is it can connect, transform, and load millions of rows of data. The problem with Excel is that after 1 million rows, Excel's capacity is done with. Right? Excel, in one Excel sheet, you can maximum you can paste data of 1,048,576. The Power BI allows you to connect, transform, and load millions of rows of data, right? And at the same time, databases can be a tablet, flat files, web, cloud service, anything you can imagine from where you can get data. Power BI will import that data and will transform into a common look and feel where you can start working on it. Then you can build relational models to blend data from multiple sources. So what it is saying is that as if you have used Excel, so in Excel you would have seen that we use VLOOKUP formula. Do you remember, guys? Do you have idea about VLOOKUP? Yes, yes. Okay, so what VLOOKUP does is it will connect two different tables, right? We'll get data from one related common fields between two tables, and we'll try to bring in data. Here, the data modeling, what it does, by simply connecting two tables, the same impact can be created, which we do using VLOOKUP.
Like we can connect the two or multiple tables and into different data models. So it may sound a bit confusing, but don't worry. As we move ahead, it will become very clear to us. Next, define complex calculations using data analysis expressions. We can define very complex formulas and expressions using DAX there. And then bring data to life with interactive reports and dashboards. Develop a versatile in-demand skill set. So it is in-demand tool, which we all know. Now, just a comparison between Excel and Power BI. Excel is like in a spreadsheet, but Power BI is a reports view, right? It will create reports view for the final consumption. Here we use pivot tables, A1 notation. A1 notation means there is cells in Excel and all the cells are represented by an alphabet and a number. So A1 notation is there. Here we have interactive dashboards and Power BI service. Here we have cell formulas. The common thing between the two is these three things. They are also available. Power Query is available in Excel, also available in Power BI. Data modeling that can also be done in Excel and can also be done in Power BI. DAX expressions can also be written in Excel, can also be written in Power BI. So this is a common thing there, but using these three things here, we can create multiple report views. We have customized visuals, interactive dashboards, and then Power BI service using which we can publish it and can be used by different people in the organization and can do different things at the simultaneous way. That is the beauty of Power BI. Okay. Excel and Power BI are built on the same analytical engines. Yeah. So analytical engines are same for both of them. And I'll try to jump between both so that you get more confident with Excel. Some things you may have not seen on Excel, that also I'll try to show you where Power Query is, where data modeling can be done, and what are the DAX things in Excel. Okay. Now installing Power BI desktop. Do you both have Power BI in your laptops installed already? I don't think I have it installed. If you go here, if I type here, or in the search, you can just type Power, and this kind of symbol should come. Nandini, you can please check. Yeah, just a second. I think your screen is lagging because I am not able to catch it. Acha, you can't see it, but I'm So trying to I show. don't know if it's for me or if I can see Power BI though. Yeah, I got it. I have Power BI. Even Power I BI. have. Okay. Okay. So Power BI desktop app is written. This is what we will be using it. Okay. So if it is there, no need to install and other things. These steps are redundant, settings and all, because once you have it, it's fine. So now we will look at the Power BI workflow, how Power BI workflow will go. Power BI will have actually two parts to it. One is called the backend, which is called Power Query Editor, and the other one is front end. So instead of talking in this, I would like to open a Power BI file and show it to you guys. Can you see this Power BI, the file which is open in my screen right now? Can you see that? Yes. Yep. Okay. So what I'll do is No, I'll no, say apply. Yeah. it's still showing the presentation for me. Okay, now it came. Yeah. I think there's a lag. Okay. 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 Give me a second. It's updating. Yeah. Okay. So this is the Power BI interface, which you can see in the front, right? This is what Power BI is, right? And it has got, when I say that there is a back end and there is a front end, this is actually the front end of Power BI. Okay. And front end of Power BI is this. Back end, from where we'll go to the back end. If you see here, there is an option called get data. Can you see? Yep. And this
allows you to get data from Excel, Power BI models, data flows, Dataverse, SQL, analytical, Textverse, more, anything you can fetch data. If you want to fetch data, you can fetch from anywhere, right? You'll see that there are hundreds of options to fetch data from. Yeah, currently, the project my team is working on, what they're doing is from HTML, they're converting it to, they're moving the data into Power BI. Yes. That we will also do one example we'll do for that, right? Okay, so the get data is the place from where we will get data from different sources, right? And then once you have got some data, if you want to go there, like transform data, if I take here an example, get data, and I will click on this text and CSV, and then let me go here and show you one file, Power BI training, ECH raw data. And suppose I am trying to pull this product table. So I'll click on this product table and I'll say open. As I click on open, this interface opens up, right? And here it is trying to tell me that DECH product table I have brought in .csv. These are the columns. And at the bottom, you will see load, transform, and cancel. Cancel will simply cancel it. Load will directly take it to the Power BI front end. Transform will take it to the Power Query, where we can make changes into this. Okay. From data. Yeah. So we will do it many times. Don't worry. Don't write anything. We will do it at least 100 times. We'll import and we'll bring and we'll do a lot of things there. Okay, so no need to write anything. Whatever content I have given is more than enough. Okay, don't take notes. Just working in these 2 hours, 4 hours a week, we should be able to manage that. Okay, so here I'll just click on the transform data, and as I click on the transform data, this interface will open up, which is called Power Query, this window. And this is the backend. Okay, and this is available in Excel also. I'll show you in Excel also. Okay, and once the data comes in here, the data has come here, and here I can make certain changes into the data, like the heading is product key for the first column. If I want to change this heading name, I can change it. Here it has taken 1, 2, 3 means this is a number, whole number. So if I feel that this is not a number, this is something else, I can do it. For example, if I feel this is a currency, I can click here. Hello? Yeah, there's nothing visible on my screen. I think I have to rejoin. There's some issue. I can't see anything on my screen, the screen that you shared. एक बार rejoin करो. Shusha, you can see? Yeah, I can see it. So एक बार Okay. rejoin करो. Yeah. We'll wait leave for and, you. Yeah. 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 Okay, so we can change it to anything. Okay. Yes. Here, if I say that this is a currency, fixed decimal number, so it is saying that do you want to change this? So I say yeah, replace current, and it has put $1 here. So it is now in a currency format. Okay. So there are many things which can be done in the backend, which we'll explore, and we'll see each and every command. Don't worry. Right, and we will study about it in detail and we'll understand this. So this is basically the backend which we are talking about. This is the backend, and the backend, once we have done it here, then we load it to the front end. And believe me, the tool is very simple. Only thing is that we need to practice it many times, which we will do during our class. So once we keep practicing it, we will become very confident on this. Okay, so I have a question for you, sir. The thing is, I have a Microsoft Valid license. Will I be able to do the transform data if I have to practice? Will I be able to do it myself? Yes, of course. Okay. Power BI desktop is on your system. You'll be able to do everything which I'm trying to show you. We'll be doing the projects. I'll show you how you have to practice again and again.
Fine. right? So that we'll Yes. see. The only thing which we will not be able to do is use Power BI service, which is collaboration, wherein we share. For that, we need to buy the license. Okay. Hello, Nandini. Yeah, I'm back. Okay, and are you able to see the screen now? Yeah, the screen's visible, but as soon as you start working, then it'll start lag. Now it's not lagging Okay, right now, okay, but I'll tell if it starts lagging again. yeah, yeah. Okay, Shisha, we can start. Yeah, please go ahead, sir. Okay, so see, this is the Power Query backend which I was saying, and here we can work on that table which we imported here, and we can do a lot of things on that table. Right now, it is showing me DECH product table. Name of the table is here, right? It is also visible here. DECH product table. Can you see my cursor on the right hand side? Yeah, okay. You sorry about that. ECH product table, which is a column. Uh, it's not the column, it's written here. You can see my cursor going round and round. Yeah. Their name is written, properties name. Okay. Hmm. And below that, this is the table. This is name of my table which I have imported. Okay. I have given it a name, dimension table. I will also explain the nomenclature, how we name the tables. It is D means dimension table. ECH is the company's name. I have given my company's name, Excel Career Hub. And then the table is a product table. Okay. Okay, and this product table is having all these columns here: product key, product subcategory key, product SKU, product name, model name, all these things are there, right? Hmm. Here, suppose this product cost is there, right? Product cost. So for the product cost, suppose this is a whole number 13.0863. I want to convert it to currency. So as I showed you, I'll just select this, and on this 1.2, if I click and say fixed decimal number, it will convert to the currency format. It is saying replace current. Yes. So it is converted to currency 13.09. So all these changes we are doing is happening in the Power Query. Can you please do it again? I could not catch it. Yeah, I'll show you. See what is happening. This is a column which is having the product cost. Can you see? Yeah. And next to the name product cost, if I want to change the name of it, I can just double click and change the name product cost. I can write cost of the product. Cost of the product by double clicking on this. Okay, so I can change the column name here. Okay, can you see that? Okay. Yeah, I saw. And then the type of the data. Type of the data is just next to it. Can you see dollar? If you click on this, these are the different data types: decimal number, fixed decimal number, whole number, percentage, date and time, all these things are available here. So I can change the format of my data from here. Okay. And other things like doing some calculations, other things can be done. I'll just show something which I don't want to do, but I'll just do it for you to understand. Suppose the product cost has to be multiplied by 2. Okay, I want to multiply product cost by 2. So I can click here and I can go up, and here I can just click on add column. And when I say add column, it gives me a lot of options like standard. Here I say multiply. It will ask me by what. So if I say by 2 and say OK, it will create a column here, and it has multiplied the product cost by 2 times and put a column, new column here. Can you see? And I can rename it as new product cost. Okay, so all these things we will see. Don't worry, I'm just trying to show you that what actually the Power Query does. We will be taking number of examples and we'll be practicing it. Don't worry about it. Okay,
Right now, I just want you to see the back end and the front end. So once I have made these changes, I have made 2-3 changes, and I want to load it to the front end. So what do I do is, in the back end only, back end means my Power Query interface. This is my Power Query interface. I'll go to the home tab, and here I have an option called close and apply. Can you see? Close and apply. Okay. Apply will simply apply and the window will keep open. Close will not apply and close it. Close and apply will apply and then close the window also. Basically, Okay. you're saving the, the Yeah. changes you have made and apply. Okay, got it. And apply means taking it to the front end. So when I click it here, it will take it to the front end. Now it is just loading and I have opened the front end. Now you can see here deep ECH product table. Can you see here? Yes. The same product. And there are 3 things on the left, 3 icons here on the left, and these are the 3 front end tools. Okay, the first one at the bottom is the model view, where I said that we'll be creating our data models. This is the place where we'll be creating all the tables will come here. Different tables which we import from different sources, all will come and sit in the model, and here we will be creating data models with these tables. Just above that is the table view, where we will see all these tables. If I click on the DECH product table, again you will see all these columns coming up. Right here we will be writing the new measures. Can you see here, new measure? We will be creating DAX and other things in this view. And finally will be the report view. This is the report view on the top. This Canva is the report view where we'll be creating different reports. If I click on plus, we will keep adding the sheets here. So let me see if I have my other Power BI file open so that I give you a better perspective. I'll open this one. This is the ultimate file where we all will reach when we complete this project. So let me show you that. I'm opening another, and you can open as many Power BI files as you want. It is just like Excel. Only the look and feel is with yellow color symbols and all, but other things are very, very similar to, because it comes from the Microsoft family only. The only thing is, because it is loaded with a lot of things, takes time. And I believe I have quite a few of them. Yeah. So this is the front end, the visuals which we can see from the report view, right? This is the report view. And here there are different sheets where I have prepared different reports. The first one is executive dashboard. The second one is the customer insight. Third one is the product insight, right? And then I have got map visuals for different continents, what is happening in different continents, what is the sale and other things, right? So this is your report view. Okay, below that we have got table view. Table view will have all the tables which I have here. I have got DECH customer table. If I click on this, customer table is there, product table is there, subcategory table is there, right? Territory table is there. All these different tables are there. This is in the table view where we have written DAX and other things. And then this is the model view. The model view will have all the tables and the models created here. Can you see? Yes, we can. Okay, Though it is so not what clear. we have done, pardon? It is not clear what it is, but yeah, I can see the. Okay. I'll just make it a bit bigger. Okay. Okay, so what is that? These are all different tables which I was talking about. I was showing you only one table. See, I was showing you here the product table, DECH product table, right? So this is the product table in this view here. And it has got all those column heads here. These are all different column heads in the table. Product name, product key, product price, product size, product SKU. These are the columns in that particular table.
Okay, and when we are connecting these tables, the lines between these two tables is making sure that I can create a report with column heads here or here or here. It's not the report only with one table. Once I have connected these tables, I can create report something which is not present in this table, but it is here. For example, product category key or the product category name may be present only in this small table. It may not be here. But here I may get product price. So from the product price, I can pick something and get for that particular category name, I can get the price from here. So I know today it I may did not look understand. Can you repeat? yes, yes, yes. See, in what happens that when we are bringing in tables, different tables will have different informations, right? For example, Okay. this is a table which is called a territory table, and it is showing that it is working in these regions, these countries, and these continents. Okay. 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 Yeah. Another table is there which I may say customer table. Now this customer table will have information related to customer. Customer key 12671 is a customer key for Mr. Alang Huang. Right, his details are there. He's a married customer, gender is male, his mail ID is there, his annual income, total children, bachelor. So we have accumulated the different customer related information which is available in the customer table. Okay. Okay. Yeah. Then there is a product category table where you will have information related to product, that the company is making only these 4 different products: bikes, components, clothing, and accessories. Hmm. So in a company, you will get different 10, 15, 20 different tables which are giving you different informations. But now your boss may ask you to prepare a report for the customers for a particular region. See, in United States, he may want to have a customer detailing for the United States, right? So the Okay. Okay. Yeah. the information here that United States falls in the Northwest is only mentioned here. It is only here in this table. In the customer table, it may be written that that particular customer belongs to North America. But from there, we will pick up that North America is in United States and United States is in our Northwest region. So he will fall in the Northwest category. The information will pull from this table also. Okay. How it can be pulled? Oh, Because we have created this data model. We have connected the relevant tables here. okay. 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 And Yeah, I got because it. we have connected these tables, we are able to draw and create reports here. Here, different reports will be created. Different reports will be created here using these data models and the data which we have brought in. If you want to see top 10 products, here if I click here at one single point, it will give you different views here. 2 million revenues on this particular day. So all these things are happening here. Monthly revenue, all these things are only able to happen ultimately because we have created a proper data model and connected them in a proper way. Right now I don't want you to think that ये कैसे होगा, ये मत सोचना अभी सिर्फ ये देखो, मेरा आज का एम इतना है कि यू शुड गेट एन ओवरव्यू कि पावर बीआई क्या है और ये क्या क्या कर सकता है. सो today's idea is to show you that कि डेटा आएगा, डेटा होगा, डेटा will come to Power Query. In Power Query backend, we will do certain things. We will do certain things in Power Query to clean the data. Then we will load it to our फ्रंट एंड के 3 हिस्से हैं. एक हिस्सा है ये टेबल व्यू, जहां पर ये सारे टेबल्स आके बैठे हुए हैं. ओके, कैन यू सी? Yeah. और इन टेबल से हम डेटा मॉडल तैयार करेंगे और फिर हम इसका विजुअल्स तैयार करेंगे. दिस इज द सिंपल समरी ऑफ द होल थिंग. अब यहां से तुम बोलो कि मुझे वापस जाके, जैसे मेरे को ये वाला टेबल है, डी प्रोडक्ट टेबल इज देयर एंड आई वांट टू डू समथिंग इन द पावर क्वेरी अगेन, गो बैक एंड डू इट. कैन आई डू दैट? यस, वी कैन डू दैट. यहाँ पे आप कोड व्यू में जब जाओगे,
अगेन वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी. If you go to this report view, here you will see again that get data option जहां से हम गए थे. This is the transform data. The moment you click on this and click on transform data, तुम्हारा Power Query खुल जाएगा. The Power Query, your backend will pop up from there. और यहाँ पे आके आप उन पे ठीक कुछ करना है चेंज तो कर सकते हो. और फिर यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई करोगे, फिर आप फ्रंट एंड पे चले जाओगे. फ्रंट एंड आ गया, फ्रंट एंड में काम करके और हम ऐसे विजुअल्स और चीजें बना पाएंगे. राइट गाइस, तो 1 मिनट हम लोग थोड़ा बातें करते हैं. आप लोग को कैसा लग रहा है? लॉस्ट तो नहीं फील कर रहे हैं? No. या शीशा? No, no, no. ओके I'm able to follow it. ओके ओके ओके, ठीक है. नंदिनी? Yeah, it seems cool. I can flaunt it with my friends, obviously. ओके, चलो ठीक है. ओके ओके, अब हम लोग वापस जाते हैं मेरे पीपीटी पे. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा तो हम थोड़ा सा काम भी अभी करेंगे. विल ट्राई टू डू सम वर्क आल्सो. ओके, सो मैं था यहाँ पर, आई वाज ऑन माय पीपीटी. यस, सो पावर बीआई का वर्कफ्लो बताने के लिए मैं लेके गया था. इट हैज गॉट अ बैकएंड व्हिच इज अ पावर क्वेरी एडिटर. इन द पावर क्वेरी एडिटर आई शोड यू फ्यू थिंग्स देयर. और उसके बाद ये फ्रंट एंड था. फ्रंट एंड पावर बीआई का है, उसमें मॉडल व्यू है, डेटा व्यू है, and there is a report view. All three I showed you, right? Model view will connect the tables, data view we will write some DAX, and report view we will create the visuals. Now again थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया है, कभी बाद में when you are sitting alone going through this. Power BI data is loaded and transformed in the Power Query editor. This we saw it. छोटा सा स्टेप हमने देखा था अभी, राइट? ऊपर भी इन्होंने what I have given here is Power Query editor, then model view, then data view, and the report view. All three steps shown again and again here, so that आपके दिमाग में पूरा अच्छी तरीके से बैठ जाए. Data is loaded and transformed in the Power Query editor. Data models are configured in the model view. Model view के अंदर करने के बाद then table features and calculations are added in the data view. वो मैंने बोला था second बीच में. यहाँ पर हम DAX और measures add करेंगे. That will take a lot of time to learn when we start learning in detail. And finally we will create some interesting visuals in the report view. So ये आपका introduction part हो गया. बाकी कुछ resources वगैरह है जहाँ मिलेंगे. So ये मेरा खत्म हुआ. Then I will open the next part and now we will get into some कार्यक्रम. Okay. Okay. So I'll open the second one. So in order to come prepared for the next class, if we go through this PPT once, we'll be prepared for the next class, right? The tomorrow's class. हाँ, सी कैसे ये इम्पोर्टेंट है पता है नंदिनी एंड सुषा? आई विल हेल्प. अभी थोड़ी देर में मैं आपको, आज के क्लास में तो मैं नहीं देने वाला, कल जो क्लास होगी हमारी संडे की, उसमें मैं आपको ब्रीफ उस प्रोजेक्ट का दिखाऊंगा जो हम प्रोजेक्ट करेंगे. एंड व्हाट आई विल गिव यू इज, लेट मी शो यू raw data. I'll give you this raw data to you. I'll mail you today Power BI training, and I should have that ECH raw data. Okay, ये जो फाइल्स हैं यहाँ से लेके ये टेबल्स होंगी जो अभी तक आप देख रहे थे. कैन यू सी these 10 tables? Right, I will give you these 10 tables and हम इनको इंपोर्ट करेंगे, अपने उसके अंदर ले जाएंगे, और इसी को फाइनली जो आप मेरे पास डैशबोर्ड देख रहे हो ना, विल प्रिपेयर द सेम things, all the things we will do using all these tables. This is a company's data to believe. There is a 3-year sales data 20, 21, 22, and then there is a return data, territory data, subcategory, product, customer, calendar. All these tables we will import, we will work on them and finally prepare a report. सो ये काम जो हम करेंगे ना, इसी को आपको बार बार करना होगा. आप 1-2-3 बार करोगे हर काम को तो ग्रेजुअली यू विल गेन दैट मास्टरी. ओके, ठीक है? Yep. Okay, yeah. ओके, सो नाउ आई टेक यू टू द सेकंड वन. आपने पूछा था तो मैं इधर आ गया. एंड पावर बीआई ट्रेनिंग से मैं जाऊंगा 15 ट्रांजैक्शंस, गिव दिस, एंड
we go to the second one, Power BI, Power Query. Now हम लोग Power Query को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. We will study the Power Query in detail. The first tool we will start learning about it. Okay. So connecting and shaping data, Power Query Editor. This is the first component which we are going to start. Connecting and shaping data के अंदर we will cover introduction to Power Query, data connectors, Power Query Editor क्या है, कनेक्शन के मोड्स क्या हैं, फिर इसका प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं, व्हाट आर द कैलेंडर टूल्स एंड व्हाट आर कंबाइनिंग क्वेरीज. ये सारी कुछ चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे एक एक करके. दिस एंड मच मोर विल बी कवर्ड. अच्छा, okay. Nandini, you have some food issues in your mess or what? You'll be able to manage that, or? Yeah, I'll be able to manage. Actually, the dinner timings are till 10, but I'll be able to manage it. I've asked somebody to keep food for me. Okay. Yeah. Okay. So we are going to talk about the front end and the back end. इसकी बात हम लोगों ने कर ली है, so I'll not repeat it. Back end में connect and extract है, transformation है, merging, appending है, all these things are there. And front end is your modeling and all those things which we have repeated. Type of different data connections. So this also I have shown you that there are every possible data thing can be imported and brought it into this. Okay, वो आप लाके इसके ऊपर काम कर सकते हो. और उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं ये हैं. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. मैंने आपको कुछ आज एक्सेल की फाइल्स भी भेजी थी. आई हैव सेंट सम एक्सेल फाइल्स आल्सो, राइट? Yeah. You have Excel files also which I sent? Yes, I have downloaded it. Shusha, you have it? Excel I didn't see, only Power BI. Just a minute. अभी भेजा? नहीं, तो सुबह ही भेजा था. आफ्टरनून आई बिलीव और इवनिंग. कंसल्टेंसी ट्रेनिंग्स, रिकरेंट, पावर टूल्स, पावर टेक्स्ट. हाँ. अच्छा, PQ पाँच. मैंने सिर्फ वो पावर BI का ही देख रही थी. ओके. वो मैंने इसलिए भेजा कि मैं थोड़ा सा पावर क्वेरी आपको ना एक्सेल पे भी दिखाना चाहता हूँ. उसमें PQ टेक्स्ट फंक्शंस करके लिखा हुआ है. उसको एक बार ओपन करिएगा. राइट. और यहाँ पे आप देखोगे, इफ यू कैन सी द फर्स्ट फाइल टेक्स्ट फंक्शन केसेस एंड यू विल सी द प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. कैन यू सी दिस? Yep. And you can see that it is not in a proper order. कुछ कैसे लिखा है, कुछ कैसे लिखा हुआ है. Okay. So what we have to do is let's keep our cursor in the first cell. Right. ये आपको साथ में करना है guys, है ना? आप दोनों को साथ में करना है मेरे. Okay. Okay. Keep your cursor here. Click on the data tab. And in the data tab, there is from table range. You are able to see, Nandini? No, just a second. From table range, where is it? Data tab में click करना पड़ेगा. Yeah, I went to data tab there. Yeah. Left में देखो from table range. Just a second. Yeah, I got it. Got it? From table range को जैसे click करोगे ना, what it will do is it will select the whole data and this small window will open up. Yes. Okay, इसमें my table has got headers पे click कर देना और OK कर देना. ठीक है? As you say OK, जैसे तुम OK करोगे, ये देखो पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा जो कि आपने पावर बीआई में अभी देखा था थोड़ी देर पहले. सेम विल ओपन हियर. Can you see? Yeah. No, I'm not able to see. कैसे करना है? I mean,
मैं बंद करता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ। ये आपको पहला वाला शीट मिला था, टेक्स्ट फंक्शन केसेस मर्ज डेटा। Yes. Here keep your cursor in the first cell, click on the data tab, go to from table range, Okay. and click on that from table range. Hmm. It will take the data in the Power Query editor. वो एक टेबल बनाने को पूछेगा, ओके करिए, सीधा इट विल टेक यू टू द पावर क्वेरी एडिटर। Okay. Oh, this is the first time I'm using. Okay. अच्छा, अभी ये एक्सेल के अंदर ये दिख रहा है, यही आपको पावर बीआई में भी दिखा था। Why I'm showing this is because you will get lot of opportunity to work on Excel as well, right? तो एक्सेल के अंदर भी अगर आपको पावर क्वेरी आता है ना, तो you'll be master, आप बहुत अच्छे से काम करोगे। ठीक है? अब देखिए क्या है, इसमें हम लोग को प्रीफिक्स दिया हुआ है अलग कॉलम में, फर्स्ट नेम दिया है एक अलग कॉलम में, लास्ट नेम दिया है एक अलग कॉलम में, मुझे इन तीनों को जोड़ना है, राइट? सो हम इन तीनों कॉलम को जोड़ लेते हैं। लेट्स सेलेक्ट ऑल दीज 3 कॉलम्स, राइट? एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट। मैं इसमें अगर इसको मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूं, सो इट विल आस्क मी टू मर्ज कॉलम्स, और अगर मैं इसको ऐड कॉलम करता हूं, ऐड कॉलम, एंड ऐड कॉलम के अंदर वी कैन गेट ए ऑप्शन हियर टू मर्ज कॉलम्स। मैंने ऊपर देखिए जहां होम था उसके बाजू में ट्रांसफॉर्म है, उसके बाजू में ऐड है, राइट? मैंने उसमें यहां पर क्लिक किया तो मर्ज कॉलम्स है। ठीक है, इसको जब मैं क्लिक करूंगा मर्ज कॉलम्स को, तो ये यहां पर मेरे से पूछेगा कि तुमको बीच में कोई सेपरेटर चाहिए क्या? आर यू लुकिंग फॉर सम सेपरेटर? सो हियर आई कैन से दैट गिव मी ए स्पेस। ओके, गिव मी ए स्पेस। बोल रहे नए कॉलम का नाम क्या रखूं, मर्ज्ड? तो मैंने बोला नहीं, इसका नाम रख दो फुल नेम। ओके, एंड जस्ट से ओके टू इट। और आप देखो क्या हुआ। मैं वो बहुत ज्यादा स्पेस्ड आ गया, मिस्टर और रवि, और बहुत दूर दूर लिखा है। Correct. आप दोनों में भी, आपके दोनों के लिए वैसा हुआ है? Correct. ओके, सो आप लोग एक काम करो, अभी जो लास्ट स्टेप हमने किया है इंसर्ट मर्ज कॉलम, उसको क्रॉस कर दो। यहाँ साइड में देखो देयर इज ए क्रॉस ऑप्शन, दिस इज लाइक अंडू। इसको क्रॉस करूंगा तो ये वाला स्टेप खत्म हो जाएगा। ओके, डन। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसको तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट करो, तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म बटन दबाओ, ट्रांसफॉर्म बटन दबाओ, फॉर्मेट पे जाओ एंड से ट्रिम, से ट्रिम। फॉर्मेट, ओके, या उसके ऊपर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, वो भी क्लिक करो। ओके, Okay. देखा आपने, थोड़ा सिस्टमैटिक हुआ आपका डेटा। Looks better. या नाउ गो टू दैट ऐड कॉलम, ऐड कॉलम से मर्ज कॉलम, उसको बीच में बोलो स्पेस दो, गिव ए स्पेस, एंड मर्ज कॉलम का नाम दे दो फुल नेम, एंड से ओके। या इट्स मच बेटर। Good. बढ़िया आ गया। बढ़िया। या ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो 3 कॉलम्स थे हमारे पास, इन तीनों को सिलेक्टेड रखेंगे एंड वील गो टू द होम टैब एंड से रिमूव कॉलम्स। हम बोलेंगे रिमूव कर दो बाकी ये तीनों कॉलम को। अब मेरे पास सिर्फ फुल नेम का कॉलम बचा जो मुझे चाहिए वो। ओके, नाउ विल गो टू द क्लोज एंड लोड टू। यहाँ पे अगर आपको देखोगे ना, पावर बीआई में एक ही डिफरेंस था, देयर इट वाज क्लोज एंड अप्लाई, हियर इट इज क्लोज एंड लोड।
Okay. राइट? नीचे वाले को क्लिक करो, क्लोज एंड लोड टू, क्लिक ऑन क्लोज एंड लोड टू। इसको बोलो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में तो वो A1 बोलेगा, तुम उसको सिर्फ E1 कर दो, इन द सेल E1। एग्जिस्टिंग क्लिक करो, E1 करो और ओके कर दो। एंड यू विल सी दैट द इन द E1 सेल यहां पर वो तुम्हारा डेटा निकल के आ गया। बट ये डेटा मेरा ऐसे क्यों निकल के आया? मिस्टर रवि कुमार, मिस ममता, I got it correct. यू गॉट इट राइट ना? Yeah. मैं एक बार इसके पिछले उसमें जाके चेक करता हूँ व्हाई दिस हैपेंड। बट आप लोगों को बिल्कुल ठीक आया? मैं फिर से Yes, कर रही हूँ। ओके, Data. मेरा नीचे ठीक आया है बट ऊपर इसने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है। मिस्टर रवि कुमार, आई बिलीव मैं ट्रिम मिस किया। कोई बात नहीं, मैं फिर से जाऊंगा। व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द डेटा टैब, आई विल गो टू क्वेरीज एंड कनेक्शंस, फिर से ओपन कर लूंगा उसको। अच्छा, इसमें मेरे में एक्चुअली इट इज वेरियस टाइम्स इट हैज डन द सेम थिंग, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। एंड हियर इट लुक्स प्रीटी फाइन। मैं अगर पीछे का स्टेप्स देखूं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसके पहले चेंज टाइप, and here I will just add one step to trim, transform, format, trim, add, then capitalize each word. Okay, insert merged column, removed columns, home, close and load, close and load. Yes, trim miss कर दिया था. So Nandini, you could get it? Yeah, I got it. Shisha, you also? So existing worksheet में नहीं है, new worksheet में pointed है. So हाँ, I'll say existing worksheet and then put it in E. या अब इसमें जो इसका बेस्ट पार्ट है वो पता है क्या होता है? बेस्ट पार्ट ऑफ पावर क्वेरी इज दैट वंस यू हैव डन दिस, इसके बाद सपोज यू गेट सम मोर डेटा ऑन विच यू हैव टू वर्क। आई एम जस्ट टेकिंग सम सेल्स। ये देखना नंदिनी एंड शिशा, ये लास्ट 5 सेल्स को मैंने कॉपी किया यहाँ पे। कैन यू सी? Yeah. कॉपी करके आई एम जस्ट पेस्टिंग इट बिलो, thinking that this is some new thing, new data I have got, right? और आउटपुट में कर्सर रख के राइट क्लिक करूंगा and I'll say refresh, and as I say refresh, you'll see that the same, all the steps were applied and it did for the new data also. Okay. Yeah. Okay. You don't have to go back and do everything. It will remember all the steps. Okay. Oh, this is good. Okay. And the best part to learn Power Query here is that the same thing is there also. There is no difference at all between Power Query tool in Excel and Power BI. The second one, third one, these are similar exercises. You guys can just be experimental, try few things out here. Yes, suppose in this sheet, third example, here I have got certain product IDs and I want to separate all of them into 3 different columns. Okay, so Yeah. I'll do you have this data, guys? आप लोगों के पास है ये data? Yeah. Okay, keep your cursor here. Again, do the same thing, data from table range, and my table has got header. Say okay, it will take it to the Power Query. ये लेके चला गया Power Query में. Okay. Now I want to take out all this hyphened portion in 3 different columns. I want to separate it. So I'll say add column, and I'll say extract. Okay, and I'll say
text before delimiter. I just said this. पूछ रहा है delimiter क्या है? I say dash. Dash is the delimiter. And I say okay. So it extracted everything which was before the first dash. Yeah. I keep it selected and I again go to extract and I say text after delimiter. Okay. Right. And if I say dash again, let me say what it does. Otherwise, we'll use a different tool. Okay. So what it did was it separated after the first one only, right? And from here, again, if I do extract text before delimiter, and I say dash, okay, it will extract this part. And from this only, if I say extract text after delimiter, and I give dash and I say okay, it will extract. So all three I have got differently and I can remove unnecessary columns. This one I can just select. I can say home, remove columns. Okay, that is gone. First one, remove columns. वो भी चले गया. And this one, I can say first 4 characters, middle characters, first. This I can say middle. And this I can say last. And I can now load it to the sheet from where I brought in. I'll say close and load to. It will go there only. And now, since I have written something here, I'll say G1 cell, existing worksheet, and I'll say G1, and I'll say OK. So it will load it here. ये यहाँ पर इसने निकाल दिया. Right? देख पाए guys आप लोग? Yep. Yes. And again, as I use refresh. Pardon? I think I was not able to do is that refresh that you asked. Let's try it now here. Take the last 10 cells, Control C, paste it below that, Control V, and come here in this table, output table, right click and say refresh. And it has done it. देखा आप लोगों ने? So there are many examples, Nandu. You can teach your friends, right? ये देखिए यहाँ पर क्या है? You can show somebody. Yeah. Here, if you see that there is an address, right? Shipping address. And here we want to separate the road name, the city name, and the state name. Yeah. It can be done easily using Power Query. Otherwise, in Excel, it is a tough exercise, very tough exercise. But if you use Power Query, it is so simple. उसमें जाओगे और कॉमा के बाद कॉमा के पहले बोल के सब हटा दोगे. Let us try this. Yeah. Are you hungry? आपका अभी तक food नहीं मिला है तो. No. Okay. So if I keep my cursor here, click on data tab, say from table range, and my table has got headers. Okay, ये पहुंच गया Power Query के अंदर देखो. और यहाँ पहुंच गया. Now your job is that for every address, you want to separate it into the road name, city name, and the state name. So we will say add column, we will say extract, and we will say text before delimiter, and we'll put a comma there. एक comma लगा दो और बोलो निकालो जरा देखें क्या है. उसने निकाल दिया सारे रोड का नाम. We'll call it road name. Yes. इसको लेंगे. Again we will say extract, and we can say text between delimiters. So let us try text between delimiters. And in text between delimiters, both the places give a comma, so we'll get the city name. And we'll say OK. So it will extract the city name. We'll name it as city name. Right. फिर से इसको पकड़ा and
let's see if there any way last text after delimiters, but it will require 2 step, no problem. Comma, okay. और इसमें से भी एक बार extract कर लेंगे, extract text after delimiter, again a comma, okay. So state भी आ गया, और ये वाला कॉलम और ये पहला वाला कॉलम, इसको हम कह देंगे होम में जाके remove columns. ये दोनों चले गया. So I am left with road name, city name and state. Yes. Right? Or once this is done, we can go to close and load 2. It will take us to that sheet. इसको बोलेंगे E column में डाल दो, existing worksheet में E column में डाल दो, E में डाल दो, OK बोल दो, और हमारा डेटा आ गया. We have got the extraction done. Right? और again वही चीज है, पूरा का पूरा डेटा अगर चेंज हुआ, it will take few seconds to do this whole exercise. नीचे से कुछ भी, या फिर you are adding something new, एक अपनी तरफ से ऐड करके देखो. पटेल रोड कॉमा दिल्ली, न्यू दिल्ली, and oh sorry, Delhi, and it will be in New Delhi only. City भी वही, state भी वही. Right? ये हमने किया, ये डाला आपने, और यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके देखो, जस्ट रिफ्रेश, वो आ गया. न्यू दिल्ली. Any data which is added below this, you don't have to do anything. Just right click, refresh, and it's done. Even guys. Like to try this. Pardon? Like to try this now. Yeah. Now here is doctor name. We want to put a prefix in front of them, doctor. We want to add doctor to every name, and then we want to add a suffix here, 42 years. So this is the output we want. Dr. Krishna Kumar, 42 years. So normally you have to do in Excel, can be done, but again, more rigorous, and then you have to do every time. Or query, you do it once and it's done. एक बार try करोगे guys? Yeah. Keep our cursor here. Go to data tab. From table range. My table has got headers. Okay, aa gaya. Now, for the name of doctors, I need to add their doctor, right? So I'll say add column, or even I can try transforming it here. Transform karenge, and here I'll say, I will say not extract, not exploit, format. Format के सबसे नीचे आता है add prefix. And when I click add prefix, here it will ask what is the prefix. I'll say doctor dot space and OK. And it is added. In the age, again I'll say format suffix. It is asking what? I'll say space years. Okay. 42 years. Right? Yes. And after that, it's again close and load 2, and just give the cell address. So we'll give it as existing worksheet J1. Okay. And ये आ गया आपका लेके. अब आपको किसी और को डॉक्टर बनाना है तो कोई मुश्किल नहीं है. आपकी दोस्त है अनन्या सिंह, and she is now 23. तो इसको डॉक्टर बनाना है, यहाँ जाके राइट क्लिक कर दो, रिफ्रेश, she becomes Dr. Ananya Singh. बढ़िया है? Yep. Yes. So this is the one file which we have done. We can now close this file and we can open the second one, which has got some different examples again.
date functions. I have got another one, PQ date functions. This I gave you, right? Just a second. No, yeah, we do have date functions. है ना? Yeah. Ab, you are able to get it, Shesha? Yeah. Okay. So ये देखो हमारे पास ना कुछ order, ये dates है, right? We have got some dates, and from this we want to do some extraction. We want to find out what is the day, what is the month, what is the quarter, all those stuff we want to find out from these dates which we have. So we can go to the data tab, go to from table range. It will take to the Power Query. Power Query, as I said, is a highly capable tool. उसको यहाँ पर हम लेके आ गए. Now here if you say it has come into the time and date format, can you see? यहाँ पे बगल में जो घड़ी और कैलेंडर है इसको क्लिक करो and choose the date part. It will say do you want to replace current? Yes, replace it. और ये डेट में बदल गया. Okay. Saw it? Just a second. Yeah, done. Okay. Now we want to extract few things from some information out of this data. हुआ नंदिनी? Yeah. Okay. Add column पे क्लिक करेंगे. लास्ट में डेट है, इसके अंदर पूरा दुनिया में जो डेट के साथ हो सकता है ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ द डे. सो डे को क्लिक किया एंड आई से नेम ऑफ द डे. सो इसने बताया ये 9 जून तो संडे है, 28 जून जनवरी ट्यूसडे है, 8 जनवरी संडे है. आई से गिव मी द मंथ नेम. मंथ पे गया एंड आई से नेम ऑफ द मंथ बताओ मुझे. इसने बोला ये जून है, ये जनवरी है. फिर मैंने इससे बोला मेरा ईयर निकाल के दो. व्हाट इज द ईयर? इसने ईयर भी निकाल दिया. फिर मैंने इसको बोला तुम जाओ और क्वार्टर निकाल के दो, क्वार्टर ऑफ द ईयर. वो भी इसने निकाल दिया. वर्क्स लाइक ए मैजिक. कोई फॉर्मूला नहीं जानना, कुछ नहीं जानना, सिर्फ बातें करनी है इससे. इसको मैंने बोला एज निकाल दो यार, फाइंड आउट एज. सो द मोमेंट आई से एज, इसने कुछ तो निकाला है यहाँ, बट डजंट लुक लाइक एज. सो अभी मुझे इसकी घड़ी पे देखना है, और इस घड़ी से इसने क्या किया है आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट. सो व्हाट आई विल डू इज ऊपर जाके जो ड्यूरेशन है ना, इसमें जो जाके मैं ईयर्स बोलूंगा कि गिव मी ईयर्स ब्रदर. मैंने इसको बोला टोटल ईयर्स बताओ, नॉट डेज और समथिंग. तो इसने इसको एक्सट्रैक्ट करके बताया इट इज 1.68, 2 ईयर, 4 ईयर. और फिर इसको जो राउंड फिगर्स में है इसको मैं बोलूंगा कि होल नंबर कर दो. सो 2 साल एज हो गई, 4 साल, 1 साल, 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ से. ये पहले वाला एज में चाहे तो रिमूव कर सकता हूँ. होम रिमूव कॉल. How did you do the वो whole number? ये यहाँ पर जाके यहाँ पे क्लिक किया एंड आई चूज द थर्ड वन. Okay. Got it. एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. पावर क्वेरी इज अ टूल, जादू की तरह टूल है ये. Yeah. इट्स लाइक ए मैजिक. और उसके बाद फिर आपको क्लोज एंड लोड टू करना है, और क्लोज एंड लोड टू करके इसको यहाँ पर ले जाएंगे, के कॉलम में लोड कर देंगे. एग्जिस्टिंग वर्कशीट K1 में जाओ, एंटर हो जाओ, ये आ गए. और अब आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ पता करना है, यहाँ पर आप डालो जो पैदा हुआ 1 जनवरी 2000 को, एंटर. 1 जनवरी 2000 को जो पैदा हुआ उसकी डिटेल्स बताइए मुझे यहाँ पर. डू रिफ्रेश. वो कह रहा है उस दिन सैटरडे था, 1 जनवरी 2000 वाज जनवरी था, 2000 था, फर्स्ट क्वार्टर था, 24 साल हो गया अभी उसको. एवरीथिंग इट डेट. आप इसके नीचे जो भी डेट्स मन करे ऐड करिए, रिफ्रेश करिए, सब कुछ निकाल देगा वो एक बार में. गुड डे गाइस.
Yep. ठीक है, इसको भी मैं बंद करता हूँ। थोड़ा और एक्सप्लोरेटिव हो जाना, जब भी टाइम मिले नेक्स्ट 24 आवर्स में एक बार रन करके खुद करना। Okay. एंड दिस विल और उसके अंदर तुम्हारी नजर और शार्प होती जाएगी। विद इन द टूल यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँगा, या बिकॉज ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ एनीथिंग विच आई एम मिसिंग, वो सब आपको दिखाई पड़ेगा। आप पूछोगे, सीखोगे, एंड सडनली यू विल बिकम एक्सपर्ट इनटू दैट टूल। ये मैंने तीसरा वाला खोला, PQ नंबर फंक्शंस। आज इसको करके फिर वी विल स्टॉप, मे बी टुमारो विल टेक, रात भी ज्यादा हो जाएगी। ये इंट्रो पे गए हम। डेटा 1 ये डेटा है, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही डेटा लिया है। प्रोडक्ट की कुछ कैटेगरीज है, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट है, राइट। सो इसमें से अगर मान लीजिए मैं ये प्रॉफिट वाला कॉलम नहीं हटाता, डिलीट कर देता हूँ, उसमें जाके हमको कैलकुलेट करना है, राइट। सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द नंबर पार्ट। यहाँ पे कर्सर रखा, मैंने प्रॉफिट को डिलीट कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो गाइस, आर यू एबल टू डू इट? Yeah. है ना। फिर सेम प्रोसेस, गो टू डेटा, फ्रॉम टेबल रेंज एंड से ओके। अच्छा, ये जो फ्रॉम टेबल रेंज हम कर रहे हैं ये वहां नहीं मिलेगा इन पावर BI, ओके। वहां पे हम लोग सब गेट डेटा से लेके आएंगे, बट एनीवेज वहां पे भी बहुत सारा काम करेंगे। सो यू गाइस विल गेट हैंड्स ऑन, डोंट वरी। सो ये देखो, ये नंबर्स आ गए। अब ये नंबर रेवेन्यू रुपीस करोड़ में है, लेकिन मल्टीपल डेसिमल्स में है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज इट टू करेंसी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, करेंसी पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस करंट, तो ये 2 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, करेंसी में इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों एक ही में हो जाएगा, एक्सपेंस और रेवेन्यू, राइट। अब ये अगर आपको प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, और जैसा मैंने बताया था ऐड कॉलम में जाएंगे और स्टैंडर्ड में जाके वी कैन डू एनी मैथमेटिक्स। मैं अगर इसको बोलूंगा सब्सट्रैक्ट, तो वो देखो उसने सब्सट्रैक्ट कर दिया। बट ये हुआ क्या, जरा ध्यान से देखना। हाँ, ठीक किया इसने। इसमें होता क्या है, जिस कॉलम को तुम पहले सेलेक्ट करोगे उसमें से माइनस करेगा। पहले रेवेन्यू लिया तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस किया, 951 माइनस 705, इट गिव 246। यहाँ इसने सब्सट्रैक्शन लिखा है, डबल क्लिक करके मैं इसको प्रॉफिट लिख दूंगा, Okay. राइट। तो ये जो नंबर्स वाला ग्रुप है ना, इसमें आप देखोगे कि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन। ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड इंटीजर, मॉड्यूलो, परसेंटेज, ये सब निकाल सकता है ये यहाँ से। ये मुझे नहीं समझ में, कैसे माइनस किया आपने, प्लीज बताइए फिर से। हाँ हाँ हाँ, श्योर। ये लास्ट स्टेप मैं स्टैंडर्ड, काट दूँ। हाँ, यू वेंट टू स्टैंडर्ड, सब्ट्रैक्ट या में क्लिक। पहले मैंने रेवेन्यू को सेलेक्ट किया, हम्म, शिफ्ट प्रेस करके एक्सपेंसेस को किया, राइट, ओके। and simply went there and I said subtract. So what it did, it subtracted from this one. Subtract पे क्लिक करते ही वो आंसर निकाल देगा, निकाल दिया, ओके। सो इन केस आपको एक्सपेंसेस रेवेन्यू ये करना है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐड करना है तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करिए, ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऐड, वो एक कॉलम बना देगा, एडिशन, दोनों को जोड़ दिया। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन था एक्सपेंस को, अभी अभी हमने क्या किया, रेवेन्यू को सब एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किया, अभी एक्सपेंस को अगर रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट वाज अ रिक्वायरमेंट, सो व्हाट डू वी डू? सिर्फ सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन, मैंने एक्सपेंस सेलेक्ट किया और अब मैंने रेवेन्यू सेलेक्ट किया, ओके, एंड आई से सब्ट्रैक्ट, ओके, वो माइनस में आगे देखो, -246। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन टूल्स है, राइट। सिर्फ आपको हल्का सा उसको समझना है एंड इट विल हेल्प यू डू थिंग्स वेरी इजीली। और फिर आपको उधर लोड कर देना है, लोड करने के बाद फिर यू हैव सीन दैट इट इज वेरी इजी टू मैनेज थिंग्स, राइट। सो अभी मैं इस टूल को थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे होम है,
ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम है, ये तीन चीज इसके अंदर मेन है, राइट। होम के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लोज एंड लोड टू, जिससे हमारा वापस जाके लोड होता है। रिफ्रेश इज टू रिफ्रेश थिंग्स। चूज कॉलम है, कॉलम सिलेक्शन में हेल्प करता है। रिमूव कॉलम, कॉलम को हटाए डिलीट करेगा। रोज को अगर आपको कुछ रोज सेलेक्ट करना है, कुछ रो डिलीट करना है, उसमें आपको हेल्प करेगा। कैसे है, जैसे मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। इफ आई वांट टू से कीप रोज, कीप टॉप रोज, राइट, कीप टॉप रोज, और ये पूछेगा कितने। इफ आई से 2, इट विल रिमूव अदर रोज। ओके, तो ये कभी कभी डेटा में से क्लीनिंग वगैरह में काम आता है। वी वांट टू कीप ओनली टॉप 5 रोज, व्हाटएवर वी वांट टू डू कैन बी डन फ्रॉम हियर। सो इट इज कीप रोज। रिमूव रोज इज जस्ट उसका वो कि रिमूव टॉप रोज बोलना है तो ये ऊपर के 2 रो हटा देगा, 2 4 6 जो भी बोलूंगा, ऊपर के गायब कर देगा। Also, Right. I had this doubt in Excel or in Word, when we control Z or undo, हमारा लास्ट स्टेप से undo शुरू होता है, बट हियर सिंस हमको क्रॉस आता जा रहा है, तो अगर हम कोई बीच से स्टेप को क्रॉस कर दे तो वो बीच से वो वाला स्टेप उड़ जाएगा। यस आप बीच का स्टेप उड़ा सकते हो, बीच के स्टेप में जाके काम कर सकते हो। जैसे सोर्स है, ये सारे स्टेप सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखो इसकी जो ये कभी आपको कोई पूछ भी सकता है, जब टेक्निकल बंदा मिलेगा, कि पावर क्वेरी में लैंग्वेज क्या यूज होता है, तो यू हैव टू राइट समवेयर एम कोड यूज होता है। एम कोड, yes, and this is the M code which Excel keeps writing here. ये ऊपर जो लिखा है ना, this is M code. सेकेंड स्टेप में जाओगे, चेंज टाइप, तो आप देखोगे इसने ऊपर एक और कुछ लिखा है, ये दिस इज M code फॉर द सेकेंड स्टेप, चेंज टाइप। मैंने सब्सट्रैक्शन किया था, ये देखिए इसका थर्ड स्टेप का M code है। और इन सब के लेवल पे जो नंदिनी ने पूछा अभी कि क्या मैं बीच का स्टेप डिलीट कर सकती हूँ, यस यू कैन डिलीट एनी स्टेप फ्रॉम बिटवीन। किसी भी स्टेप को डिलीट कर सकते हो, किसी भी स्टेप को मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे करोगे, बगल में ही एस्ट्रिक्स का ये सेटिंग्स दिख रहा है, दिख रहा है। इफ यू क्लिक ऑन दैट, इट विल अलाउ यू टू मॉडिफाई दैट थिंग। एंटर ए नंबर टू सब्सट्रैक्ट, बोले यहाँ पर आपको चेंज करना चाहते हो, हमने सब्सट्रैक्शन किया था, बट डू यू वांट टू चेंज समथिंग देयर, सो यू कैन गो एंड मेक करेक्शन इन द कोड आल्सो इफ यू वांट। यहाँ पे ऊपर क्या कह रहा है, टेबल डॉट एड कॉलम चेंज टाइप, ये स्टेप हुआ। उस वाले के अंदर मैंने सब्सट्रैक्शन किया, ईच रेवेन्यू को एक्सपेंसेस वाले रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को मैंने सब्सट्रैक्ट किया और करेंसी टाइप लिखा। ये पूरा का पूरा एम कोड उसने डिस्क्राइब किया है बीच वाले स्टेप के लिए। सो द ब्यूटी इज, पहले क्या होता था कि आपको ना ये कोड्स लर्न करने पड़ते थे, अब इन्होंने सारा GUI बेस्ड कर दिया। ऊपर यहाँ पर है सब कुछ, आप यहाँ क्लिक करोगे नीचे वो सारा काम करेगा, राइट। अभी देखो ये नंबर्स है, यहाँ पे सॉर्ट करना है, इट इज जस्ट लाइक एक्सेल, सॉर्ट असेंडिंग। आर यू श्योर, इंसर्ट किया, उसने एक सॉर्ट का स्टेप बीच में यहाँ पे देखो डाल दिया, कैन यू सी, सब्सट्रैक्शन के बाद सॉर्टेड का स्टेप डाल दिया। मुझे नहीं चाहिए वो स्टेप, ये सॉर्टिंग नहीं चाहिए, मैं यहाँ जाके काट दूंगा, बीच में जाके काट दूंगा। ये कह रहा है हटाना है क्या, हटा दो, वो वापस आ गया वैसा। ओके और जितने भी स्टेप्स आप आगे हम लोग करके देखेंगे, 10-12 स्टेप्स किया है, वो सारे स्टेप्स वो लिख के रखता है। किसी भी स्टेप में तुम पीछे जाके अपना डेटा उसी लेवल पे देख सकते हो। यू कैन लुक एट योर क्वेरी एट दैट स्टेज, वहां पे उसी स्टेज पे होगा। यहाँ देखो सेकंड पे डाला तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंस दिखा रहा है, तीसरा कॉलम नहीं है मेरा यहाँ, राइट। इंसर्टेड सब्सट्रैक्शन किया, ये वाला आ गया। ओके सो हम यहाँ पे होम टैब की बात कर रहे थे। यहाँ पे स्प्लिट कॉलम है जो कॉलम के टुकड़े करता है, ग्रुप बाई है, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। और राइट, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरीज भी नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग देखेंगे, कल कोशिश करेंगे और डेप्थ में जाएंगे। और पावर BI के अंदर अपने जो टेबल्स मैं आपको दूंगा उनको लेके जाके हम लोग बाकी के कुछ स्टेप्स इसमें करेंगे और सीखेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, साउंड गुड। ओके तो ऐसा लग रहा है, ठीक लग रहा है कि कुछ हो तो फीडबैक बताना, सो आई विल चेंज अकॉर्डिंगली, राइट।
So I think शाम को थोड़ा maybe आधा I don't know how much of time I'll have. Usually Saturdays are meant for हफ्ते का Family and shopping, yeah, right? yeah. Mostly cleaning, cooking. कोई बात Better. नहीं, देखिए कल नहीं भी कर पाए तो चलिए 4 घंटे मैं जो पढ़ाऊंगा उसको फिर नेक्स्ट वीक में फिर पूरा कोशिश करिएगा 1 आध घंटे जरूर करें। हाँ sure. No, ठीक we'll है, have Suबह मैं 8 to 10 सीखना है तो also. थोड़ा टाइम ये करना होगा. Sorry, Nandini. I was just saying कि we can do it in the morning 8 to 10 as well if you want to. Yeah. क्लास कल Sunday. Yeah, कल yeah, कल works with- 8 to 9 तो मेरा एक क्लास है, Oh, उसके बाद मैं चाहो तो कर सकता हूँ थोड़ा सा 10 मिनट ब्रेक लेके। फॉर यू yeah. दिस टाइम इज कंफर्टेबल सुषा और सुबह Whatever works for मुझे ना पहले आप बता देंगे तो फिर I'll plan my day accordingly. वो मुझे important है क्योंकि I have a 5-year-old son. I have to यस feed him, यस take यस care of. So I just need this information prior. तो फिर मैं उसके हिसाब से plan करती हूँ. So it would be a good idea if आप हम तीनों का एक group जैसे बनाएंगे तो हम लोग probably we can discuss it and तीनों का जो time workout होता है मेरा ठीक mostly I just need information before so that I can plan my day accordingly. तो Just be यही वाला रखें नंदिनी क्या या सुबह चाहते हो? I So- just have an interfrat thing tomorrow. So, Evening. Yeah, in the evening. And everybody is going there, so अच्छा if I go there, तो I कल wouldn't be able to अगर कृष्णा come को on ठीक time. होगा Yeah. तो कल कर लेते हैं मॉर्निंग में 9:30 से। 9:30 you Is said it? 1 minute. एक बार देखो आपका टाइम तो बहुत अलग है और मैं ग्रुप मेरा अभी मीनवाइल में 11:30 मॉर्निंग है. आप कितने बजे का बोल रहे हैं? कि कल सुबह 9:30 बोल रहे हैं, अभी आपका 11:30 1.5 घंटा आगे हो तो 9:30 मीन्स मॉर्निंग का 11 बजे करीब। मैं रात का आप 11 रात का बजे हाँ वो बहुत That- लेट हो जाएगा. बहुत लेट हो जाएगा वो। नहीं एक्चुअली मेरा 11 बजे खत्म करना चाहिए. आई डोंट आई नॉट प्रेफर आफ्टर दैट राइट. मैं फोकस नहीं कर मेन प्रॉब्लम वो है कि आई मे नॉट बी एबल टू फोकस आफ्टर दैट टाइम. Correct. So can we do it 6 to 8 in the morning for us? Will that be? That would be like if you move 2 hours when 9 o'clock class. मेरे को वो चलेगा वो टाइम. आप बताइए आपसे होगा? आप उठ जाओगे नंदी उतने बजे? हाँ 6 बजे? हाँ, I'll wake up. We are all very supportive of our frats, so I'll do that for my fraternity. Okay. Yeah. We can चलो do ठीक 6 है, to 8 if yeah. ठीक So है, that will be ठीक है, 7:30 to 9:30 my time. So that'll be fine. ठीक है, ठीक है, चलिए कर लेते हैं तो फिर हम मेरे पास भी दिन कल खाली मिल जाएगा फिर। ठीक है, हाँ ठीक है. ठीक है, ओके लेट्स डू इट। Okay. ठीक Okay. है, तो Thank you मैं so much. कैलेंडर में ठीक चेंज है. करके भी भेज सर आप दूंगा। टाइमिंग से कंफर्म कीजिए क्या इंडिया टाइम क्या है? इंडिया टाइम इज 6 AM। इंडिया 6 to 8 ना. ओके. Okay. So that is 7:30 to 9:30 PM for me. Yeah, that will work out perfect. मैं जब तक एक ग्रुप भी बना दे रहा हूँ व्हाट्सएप का। ठीक है, हाँ ठीक है. Okay. Okay, Now I'll guys. take my leave, guys. I have to go for dinner. Yeah. Yeah, हाँ okay. हाँ, ओके, कल मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you. Bye, Thank you. Nandini. Yeah. Bye.